हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग लास्ट क्लास में देखा था कि नोट के प्रॉपर्टी को कैसे हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, राइट। हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं, इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखने वाले हैं कि डीएफडीएल मॉडलिंग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो लेट मी जस्ट ब्रीफ यू व्हाट डीएफडीएल मॉडलिंग। डीएफडीएल मॉडलिंग होता क्या बेसिकली। जस्ट एक एग्जांपल, हम लोग क्या करता है, हम लोग एक्सएमएल मैसेज, अगर बिजनेस is sending some XML message from the source, then what we do, we just basically uh, send it to the output terminal. Okay, and we have a facility. We open them one of the message to you. Here if you go here in the input message parsing, you can see we have option to XML and SC, where what we'll do, once the business will send the message, we will basically accept the XML message and we will send it to output terminal. Similarly, we have an option for the JSON message, similarly for blog, and similarly for the different. Let's take example where the business is expecting to send a CSV message, and in system is expecting some value in the form of XML message. Then what we can do? Okay. Similarly, business is expecting some message in the record oriented. Then and in system is expecting this value into the in the XML format. Okay. Then what we can do? Then this in that case DFDL modeling came into. DFDL basically help us to send the message to the output format in the form of XML, basically unstructured message. If you say like that, an XML message and some message which is not in the form of proper design, and this is simple written like that English, okay, then that message basically we can use to send from the input using the DFDL modeling, and we will get that into form of XML in the output. Okay. Basically, the basic intro of the DFDL. Why we are learning DFDL modeling? Okay, DFDL modeling basically help us to send message of different format to the XML format or whatever the format you want to use the output as per your convenience. Okay. In this lecture we are going to just we are going to just send a from input node, we are going to just send a CSV message, and we will get uh, in output as a XML message. This is my our target. We will basically create a DFDL model where this is sending some message in the form of CSV, and we will send this to the output as a XML message. Okay, तो hope आपको क्लियर हो। हमने क्या करेंगे, let me create a what we have to do to create a DFDL modeling. Okay, just let me create from a scratch. Okay, just go to the file and view, and from here you have to just select the message model. Basically, message model help us to create the DFDL modeling, right? If you are using the SOAP XML NSC, then you have the option. If you are just getting the XML format, then use the SOAP XML. We will learn we will learn this in the upcoming session while we are learning the SOAP based web service. Right now, to other XML, then we have to other XML, but we are using this. We are using in as a CSV message, right? So now that's it. We will select CSV. CSV मतलब क्या होता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू डाटा, ये डिलिमिटेड टेक्स्ट फॉर्मेट कॉमनली यूज एंड एक्सपोर्ट फॉर्मेट विद स्प्लिट डाटाबेस। ओके, इसे हम लोग क्या करने वाले हैं, सीएसवी मैसेज को बेसिकली इनपुट में लेने वाले हैं और आउटपुट भेजने वाले हैं एक्सएमएल फॉर्मेट में, राइट। तो लेट मी, हम यहाँ पे सीएसवी सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लिक करेंगे। सीएसवी दिखाई देने में देखने में कैसा लगता है, तो जैसे हम लोग एक्सेल में वैल्यू को इंसर्ट करते हैं, एक्सेल में क्या लिखते हैं ऊपर
ईयर मंथ, मतलब वैल्यू लिखते जो भी एक हेडर लिखते हैं उसका से कुछ उसके अंदर में उसके आगे जो वैल्यू होता है, सिमिलरली एक्सेल में सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग करने वाले हैं। सिमिलरली आप देख सकते हैं, जैसे ईयर में एक मॉडल जो है उसके अंदर जो वैल्यू जो है इसको बोलते हैं बेसिकली CSV मैसेज। ओके, इस CSV मैसेज को हम लोग एज ए इनपुट लेने वाले हैं, राइट। नाउ लेट मी, from here you can just I want to just create a new flow, then just click on the create a new create a DFDL schema file, the widget, right. Now once I click the right next, here you have two options. Either you create an application and after that you create तो दो ऑप्शन है, राइट। एक ऑप्शन है कि या तो आप ब्राउज करके एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन जो है उसमें डीएफडीएल मॉडलिंग क्रिएट कर रहे हो। मेरे से आए तीन एप्लीकेशन है, IIB ऐप डे टेस्ट, IIB देव एंड टेस्ट टाइप करके। तीनों एप्लीकेशन में कोई एक एप्लीकेशन चूज कर लेंगे, उसके आगे उसके अंदर में जाकर हम ये बेयर मॉडलिंग क्रिएट कर देंगे। एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है कि हम क्या करें, हम बेसिकली यहाँ पर न्यू पर क्लिक करके या तो हम एप्लीकेशन क्रिएट कर लें और एप्लीकेशन के अंदर में जाकर हम डीएफडीएल मॉडलिंग क्रिएट करें, फिर फर्दर हम एप्लीकेशन के अंदर में मैसेज फ्लो क्रिएट कर देंगे, राइट। तीसरा ऑप्शन क्या है, लाइब्रेरी यहाँ पर क्रिएट करें, ऐसे लाइब्रेरी क्रिएट करें और लाइब्रेरी को फर्दर हम क्या करेंगे, फर्दर एप्लीकेशन क्रिएट करके और उस लाइब्रेरी को पॉइंट कर देंगे। तो होप यू गॉट माय पॉइंट। फिर से रिपीट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज टू ब्राउज द हियर एंड आई होप हम एक ही ऑप्शन दिखाने वाले हैं इसलिए बोल रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, जो यहाँ पर सिलेक्ट करो कोई भी मैसेज फ्लो एप्लीकेशन और उसके आगे में जो है तुम डीएफडीएल मॉडलिंग क्रिएट करो। सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर न्यू को क्लिक करके, यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो आप एप्लीकेशन क्रिएट करें और उस एप्लीकेशन को बेसिकली क्या करेंगे, उस एप्लीकेशन के अंदर में डीएफडीएल मॉडलिंग क्रिएट करेंगे, फिर लेटर लेटर उस एप्लीकेशन के अंदर में हम लोग मैसेज फ्लो भी क्रिएट करेंगे। थर्ड ऑप्शन है कि आप लाइब्रेरी क्रिएट करें, उस लाइब्रेरी को फर्दर हम लोग यूज कर दें, मतलब लाइब्रेरी क्रिएट और लाइब्रेरी के अंदर में डीएफडीएल मॉडलिंग क्रिएट करें और उस लाइब्रेरी को फर्दर हम एप्लीकेशन से में जाकर एक रेफरेंस कर दें, ठीक है। तो हम इसमें शो करने वाले हैं, बेसिकली हम एक एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं और एप्लीकेशन के अंदर में बेसिकली लाइब्रेरी ऑलरेडी रखेंगे और फर्दर मैसेज प्रोवाइड करेंगे। तो लेट मी शो यू। ओके, नाउ लेट मी राइट द एप्लीकेशन नेम। So here I am going to DFDL, right? Let me write some like DFDL modeling. I have just written a application name as DFDL modeling. Okay? Or write DFDL model. It will be now good. Okay? Now just click right click and I will do it later. Whatever. Just click on finish. My application has been written. Its name is DFDL model. Now I have to give the DFDL file schema name here also. Then let me write a DFDL something model. Okay, and I'm just getting a new to let me write a new. Okay, and here I have to write the message name to let me write it DFDL dot model. Everything you can, anything you can write. Okay, now this is basically right. What are the information basically I need to give? I just want to create application. Under that I want to just create a DFDL format. Okay, और उसके अंदर में हम लोग चाह रहे हैं तो एक मैसेज क्रिएट करना। गेट ओके, तो हम ये हो गया। हम बेसिकली क्या किया, हमने एक एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए हमने, मेरे पास ये एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगा, उसके अंदर में जो है ये डीएफडीएल स्कीमा क्रिएट होगा, उसके अंदर हम वैल्यू को जो एज पर परमानेंट उसमें इंसर्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर तुम्हारे पास आता है कि जैसे कि लेट मी ओपन लेट मी राइट ए मैसेज। हम किस तरह का मैसेज बेसिकली भेजने वाले हैं, हमने मान लो कि एक स्टूडेंट का डिटेल भेजने वाले हैं। स्टूडेंट डिटेल हम लोग बेसिकली इनपुट लेने वाले हैं और उसको भेजने वाले हैं आउटपुट में एज ए एक्सएमएल फॉर्मेट। ओके, तो स्टूडेंट में क्या क्या हो सकता है, स्टूडेंट की अगर डिटेल देखा जाए तो स्टूडेंट में नेम हो सकता है, राइट। और क्या हो सकता है, और हो सकता है उसका क्लास, इस क्लास में पढ़ रहा है बच्चा, ठीक है। उसका फिर उसका से हो जाएगा रोल नंबर, फिर उसका अगर देखा जाए तो स्टूडेंट का स्कूल का लोकेशन हो सकता है, तो उसको लिख सकते हैं लोकेशन। ओके, ना उसका और क्या हो सकता है, उसका तो देखा जाए तो नेम हो गया, क्लास हो गया, रोल नंबर हो गया, लिव इट टिल नाउ। ओके,
Basically, we are using the four value: name, class number, role, and location, right? So basically, I have to give here number of fields. Here number of field you can see one, two, three, four. So I have to give here is three, four. Okay. Now, if you see here, there is option the record first record is header. There is two. There is two option. First option you give the header name. Okay. Second option is you skip the header name and just write the name of the here the like that. Let me write some record here inside that like that Rahul. Okay. Class is 10th and roll number is like that 25 and location is India. Okay. Now you can see another let me another Rohan. Okay. Now class is 11th and roll number is 35 and 35. 35 and country is India. Okay. Now there is one option where you can write a header. Under it you are write a value, right? There is another option you can directly write a value. Okay, you can write directly value, right? There is another option. So if you just tick here, then header will be included. If you don't tick here, then header will be not included. Okay. I just want to show you how header works. So I will just tick, right? Now just click a finish. Now you can see DFDL modeling format has been created. Here basically you can if you see here here the DFDL model something what I have written in the message DFDL dot message DFDL dot model. If you just remember that I have written DFDL dot model in the message. It is showing here. Under that there is a header segment is showing and there is a fold field you can see same fold field. Under that there is a record segment where I am going to use the name, class, roll number and location. Okay. Type of the type is given at a string basically by default. Okay, you can change as per your convenient. Okay, if you see it is the minimum occurrence, maximum occurrence. So what should be the value of the minimum occurrence, maximum occurrence? You can change as per your convenient. But you see, I am going to just in the message I am going to use name as one time and class as one time and roll class as one time, only one time. The minimum occurrence is one and maximum occurrence is also one. You can see because I am going to use only one time. Okay, but if you go to a record, I'm going to at a one line I'm going to use Rahul at one time, roll number as a one time and 25 as a one time and India as a one time, right? So here for the all value it is minimum occurrence, maximum occurrence is one. That is looking good. Okay, but if you see here, I can insert multiple records, right? Like that Mohan and everything you can write multiple records. Okay, so that's the reason here it is written as unbounded. Minimum occurrence is one. The minimum one line is necessary, right? And maximum you can write any number of rows. Okay, that's the thing, right? So this is all about what are the properties. Okay, there is, if you see here there is some sample value. Okay, I can put any sample value to test the it is working fine or not. Okay, so let me show you how it's I can design. Okay, basically let me some modify this. Okay, basically I am going to use for the student detail. So let me write it as some student detail student student. Okay, DEAL. Under that I'm just going to use header as a first name, write it a name, then again it is a class and the role and again here location is. Okay. Similarly, in the if you see here the in the this field also we are going to edges.
the sequence we are going to use the same as a name, class, roll number, and location. So in the main value, so let me write it as a location. Sorry, not here location. Here location in the fourth segment. Now here the name. We copy here name, class, roll. Okay. Now it's done. Okay. Now I want to test this. So I need to just give a simple value to test this. Okay. Let me just one simple value in the class 8 and 25. Now class is 10 and roll number is 25 and location is India. Okay. Now you, what is the simple value for the header? The header should always be static because if you see the name is always be name, so I can write it as a same name, and the class will be class because it will be static. Header cannot be changed. Only change can be changed, that is the value inside the header. Now last is location, right? So it's done. Now you see here, you can write as well, you can modify this also. Write it as a student. Okay. Now it's done. So let me just brief you. Okay. What I have done basically, I want to print output. I'm just going to input as of this message, and I am to just route it to the XML format, right? This is called a CSV format. Okay. Now you can see you will also आप सेम मैसेज को एक्सएमएल फॉर्मेट देखेंगे तो सेम होगा, नेम होगा, उसके अंदर में क्लास होगा, रोल नंबर होगा, लोकेशन होगा, सेम फॉर्मेट में एक्सएमएल फॉर्मेट भी होता है. ओके. नाउ हमने क्या किया, हमने स्टूडेंट डिटेल के अंदर में हमने हेडर भी चाह रहे हैं कि हम हेडर भी प्रिंट हो, तो हमने क्या किया, हेडर का जो है वैल्यू जो है नेम, क्लास, रोल नंबर, लोकेशन दिया, और वैल्यू फिक्स रहेगा तो इसलिए हमने नेम, क्लास, रोल नंबर और यहाँ पर हमने लोकेशन दे दिया. बट सिमिलरली जो है हमारे पास क्या होगा, नेम उसके हेडर के अंदर अगेंस्ट वैल्यू होगा, तो यहाँ पर वैल्यू होगा, तो यहाँ पर स्टूडेंट वैल्यू हमने क्या होगा, स्टूडेंट डिटेल्स होगा, तो एस टी यू स्टूडेंट रहते हैं, राइट. इसके अगेंस्ट में वैल्यू होगा, स्टूडेंट का वैल्यू होगा, हर स्टूडेंट का एक स्टूडेंट का नेम होगा, हमने सैंपल राहुल लिया है. क्लास होगा, उसका कुछ वैल्यू होगा, 10th होगा, और ऑल जो होगा 25 होगा, सिंपल वैल्यू हमने लिया है, और लोकेशन जो है इंडिया होगा. इस फॉर्म में एक सिंपल वैल्यू होगा, राइट. ये मेरा पूरा एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका डीएफडीएल मॉडल का. ओके. नाउ इसको हम चाहे तो अभी टेस्ट कर सकते हैं, बट टेस्ट से पहले हम कुछ चीज आप दिखा सकते हैं यहाँ पर कि आप चाहे तो हर लाइन में वैलिडेशन लगा सकते हैं. लेट्स सेलेक्ट द नेम. नेम पे अगेंस्ट अगर जाते हैं तो नेम पे अगर देख सकते हैं, अगेंस्ट जाते हैं तो यहाँ पर वैलिडेशन कि आप चाहें तो मैक्सिमम लेंथ की वैलिडेशन लगा सकते हैं, मिनिमम लेंथ का वैलिडेशन लगा सकते हैं, फिर एनोर्मेशन एंड पैटर्न्स क्या होगा उसका आप वैलिडेशन लगा सकते हैं. तो इस तरह से बहुत सारे पैरामीटर्स हैं आप जो कि चेंज कर सकते हैं. इफ फॉर एवरी सेगमेंट, फॉर इफ क्लास में जाकर क्लास में भी सेम चीज आप चाहें तो लगा सकते हैं, सेम पैट सर. तो बहुत सारे जो है डेलीमीटर्स लगा सकते हैं आप, और फिर मिनिमम ऑकरेंस, मैक्सिमम ऑकरेंस जो आप देख सकते थे यहाँ पर था, वो सेम चीज यहाँ से भी आप चाहें तो और चेंज कर सकते हैं. टेस्ट कॉन्टेंट्स, मतलब बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, मतलब हर का आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं. ओके. तो एक चीज रहा कि आप जस्ट कि आप हर लाइन में चाहे तो कुछ ना कुछ यहाँ से भी डीएफडीएल मॉडलिंग से भी रेडिएशन को ऐड कर सकते हैं, राइट. तो पॉइंट टू बी नोटेड. ओके. अब हम लोग अभी देखने वाले हैं इसको टेस्ट करके कि कैसे टेस्ट होता है. तो आपको टेस्ट करना है, वैल्यू को टेस्ट करके देखने वाले हैं कि सेम रिजल्ट इस फॉर्मेट में प्रिंट हो रहा है कि नहीं, राइट. अगर इस फॉर्मेट में अगर मेरा आउटपुट प्रिंट हो रहा है सिंपल वैल्यू, देन इट्स माय डीएफडीएल मॉडलिंग इज वर्किंग फाइन. तो टेस्ट करने के लिए वो क्या करना होगा, बेसिकली क्रिएट लॉजिकल इंस्टेंस पे क्लिक करना होगा, राइट. जैसे यहाँ पर ओके करिएगा, यहाँ पर यस का ऑप्शन आएगा कि डू यू वांट टू ओपन द टेस्ट
रिस्पेक्टिव, मैंने आप क्या चाहते हैं कि जो टेस्ट वैल्यू हो उसको आप मतलब टेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर पूछेगा ये, डू यू वांट टू ओपन द DFDL टेस्ट पर्सपेक्टिव नाउ, ओके, यस, ये आपके DFDL टेस्ट पर्सपेक्टिव में चला गया, ओके। नाउ यहाँ पर जो है आपको आउटपुट दिखाएगा, किस फॉर्मेट दिखाई देगा, ओके। और हम चाहते हैं कि मेरे पास जो है आउटपुट हो मेरा इस फॉर्मेट में, बेसिकली मतलब इनपुट जो डाटा मेरा DFDL हो वो इस फॉर्मेट में है, ओके। तो इसके लिए हमने क्या कर रहे हैं, इसको टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर रन सीरियलाइजर पर क्लिक करिएगा तो आपको डिटेल्स मिल जाएगा यहाँ पर। serialization has been installation completed successfully, और सेम डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पर, नेम, क्लास, रोल नंबर एंड राहुल, लोकेशन एंड इंडिया आपको दिखाई दे रहा है, ओके। हम यहाँ पर आपको एक लाइन, दो लाइन के बाद तीन लाइन दिखाई दे रहा होगा, ऐसा क्यों? इसके लिए हमने जब डिजाइन कर रहा था तो एक यहाँ पर हमने एक टिक का ऑप्शन आया था, वहाँ पर लिखा हुआ था कि जस्ट मेरा आउटपुट जो प्रिंट करे, मतलब जो इनपुट लो वो बेसिकली क्या हुआ, एक लाइन नेक्स्ट करके लो, मतलब जो मेरे पास जो रहेगा, मतलब ये जो है अगर ये तो बेसिकली इस फॉर्मेट में बेसिकली एक लाइन नेक्स्ट करके होता है। तो आप देख सकते हैं हमने सैंपल वैल्यू को बेसिकली टेस्ट कर लिए हैं, और इट इज वर्किंग, लुक इट इज लुकिंग सेम लाइक एट ईच, नेम, क्लास, रोल नंबर एंड लोकेशन, नेम राहुल टेस्ट 2020, ओके, सेम लुकिंग लाइक दैट, ओके। नाउ हम चाहते हैं बल्क मैसेज को टेस्ट करना, ओके, तो लेट मी टेस्ट द बल्क मैसेज आल्सो, सेव द मैसेज, XML by XML, now DFDL test, now I have sent the message, now let me test the message. If you want to test a message, uh, if you want to test a message that from the local system, then what we have to do, we have to same, you have to test parser model, you have to click from here, you can import the message from your system, okay. Just click on browse, okay. Here you open, if you want to select from your local system, just click this option and you can browse from your local system. Let me, my message was this, right? I just selected that message. Just click OK and just click on OK. Now you can see, do you want to open the test DFDL perspective, मतलब ये क्या आप इस मैसेज को टेस्ट करना चाहते हैं, then it's okay, तो yes I want to test, so just click on yes. You can see same information here showing, ये parsing completed successfully, you can see my input message what I am sending, it is parsing successfully, तो हमारा जो है DFDL मॉडल जो है पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है। हम जो इनपुट मैसेज दे रहे हैं उसको वो इजीली तरीका से वो पार्स कर रहा है, मतलब मेरा जो DFDL मॉडल जो हमने क्रिएट किया है, ये जो हमने मॉडल क्रिएट किया है, इट्स इज वर्किंग फाइन, राइट, बिकॉज हमने जो है इनपुट में हमने ऐसा मैसेज दिया और इस मैसेज को ये क्या कर रहा है, पार्स कर रहा है। आप देख सकते हैं सेम इन्फॉर्मेशन जो है, नेम, क्लास, रोल, लोकेशन, राहुल, रोहन करके इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रिंट हुआ है। Now it's working fine. Okay. Now अब बात करते हैं, मेरा तो DFDL मॉडल कंप्लीट हो चुका है। नाउ यू कैन सी सेम हियर फ्रॉम, अगर XML फॉर्मेट देखना चाह रहे हैं इसको, तो XML व्यू में ऐसे देख सकते हैं, एक चाहे तो यहाँ पर पूरा बहुत बड़ा बड़ा XML फॉर्मेट में। नाउ अगर ट्री का फॉर्म देखना चाहते हो तो ये देख सकते हैं, स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर में क्या है, स्टूडेंट है, ओके, नेम, क्लास और इसके स्टूडेंट के हेडर है। उसके बाद देखना चाहते हैं उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट की डिटेल है, पहला स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट, तीसरा स्टूडेंट एंड चौथा स्टूडेंट, टोटल 4 स्टूडेंट का डिटेल है। आप सेम देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 2 3 4 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट डिटेल है। सेम देख सकते हैं यहाँ पर 4 स्टूडेंट का डिटेल्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो सेम फॉर्मेट हम चाह रहे हैं कि आउटपुट में प्रिंट कर। मेरे पास जो है DFDL मॉडल कंप्लीट हो चुका है। नाउ अब हमको क्या करना है, हमको एप्लीकेशन क्रिएट करके और उसको हमको पॉइंट करना है DFDL मॉडल को। तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने क्या हुआ, इस ऑलरेडी एप्लीकेशन हमने क्रिएट कर चुके थे जब हम DFDL मॉडल क्रिएट कर रहे थे, और उस एप्लीकेशन का हमने नाम दिया था DFDL मॉडल। उसका हमको मैसेज फ्लो क्रिएट करना है, और ताकि उसके अंदर में फिर फर्दर हम मैसेज फ्लो डिजाइन कर पाए और इस DFDL मॉडल को हम लोग यूज कर पाए, ओके। लेट मी क्रिएट ए मैसेज फ्लो।
मैसेज फ्लो का नाम हम क्रिएट करते हैं containity mode. This is the basically a container where under this is under that I am going to create a message flow. Okay, let me write the message flow name as a DFDL DL dot DFDL. Okay, now use a use a schema that is always preferred a good. Using a schema is always a good preference. Okay. DFDL dot link. Okay. Now click on finish. Now is my blank space message flow created. Now I need to just use the few nodes. Let me use the MQ input node, some MQ output node, which I want to create a simple flow, and a compute node. Now just join this. Let me create a queue, another queue, test to test this. Okay. Let me create a queue into new queue to check this DFDL. Mm, I'm sending in CSV format. Okay. Let me write it as CSV dot in. Good. And click on finish. Okay. Now my queue has been created. Let me do this here. I have used. Now I am getting in the XML format. Let me write in the XML. XML. Click finish. Next and finish. Now my second queue output has been created. Now it's done. Now remove the unwanted codes. Now it's done. Okay. Now to DFDL modeling, you need to change, do some changes in the input. Right? So name I have already written what where I need to put the message. We already लिख चुके हैं. Now in MQ input parsing, basically I need to select DFDL data format description language. Okay, because I have already created the DFDL modeling here, and I am going to use that here. Okay, so I have to just select the DFDL modeling. Okay. Under it, I need to select the message model. Basically, I have not created a message model. I have just if you are going to create a library, then message model is going to be created. Okay? But if you are creating a application, then directly you can use the message. Okay, then let me select the browse the message, and this is my message here. Resident detail. Okay, there I just selected from here. Okay, now it's done. Parsing option, these all are okay. Okay, these are okay. Now my everything has been created. I also in output queue I have just written as XML. Let me do some change in the compute node. Basically, I am expecting some value in the XML format. So that's the reason I have to read. I have to write output root dot XML NSC. Okay. और हम मैसेज कहाँ से ले रहे हैं, DFDL से ले रहे हैं, तो हमको लेना होगा इनपुट रूट और कहाँ मैसेज फॉर्मेट में रखा है DFDL. तो लेट मी राइट एज DFDL. I will show this also. Not need to worry. Okay.
It is all done. Save it. Now looking good. Now let me use the exception handler. If in case some exception, use the library directly. I am going to use the library directly. Okay. In exception queue, I am to be already have given error.q, which I have formatted that property. This property already formatted by me. So I'm just I can use directly at message flow level at the error.q. Let me connect the terminals. Let me add a breakpoint. You can directly you can use a breakpoint to like that, add a breakpoint also, and you can directly do one thing. You can directly just see like add a breakpoint after node. It will just add all that point. You can do add a breakpoint after node. Okay. I have added a breakpoint. Now whole message flow has been created. Let me just overview small thing in a short. Okay. What I have done. I have just created a message model. Okay. Under message model, I have two options. One is either you create a library or you directly create an application. Under that you can create a message model. I just selected the I just created a message model. I just selected a CSV and move forward. Under it I just used to हम क्या किया हेडर क्रिएट किया हेडर क्योंकि हेडर चाहिए था इसलिए हमने हेडर क्रिएट किया उसके बाद हमने हेडर का वैल्यू चाहिए था तो हमने वैल्यू के लिए हमने ये वैल्यू क्रिएट किया राइट यही मेरा उसका हमने डीएफडीएल को टेस्ट किया टेस्ट करके देखा उसका हमने इनपुट से भी हमने टेस्ट करके देखा इनपुट वैल्यू लेकर ओके और इस तरह से हमने डीएफडीएल का टेस्टिंग किया फर्दर हमने क्या किया हमने एक एप्लीकेशन का अगेंस्ट मैसेज फ्लो क्रिएट किया और मैसेज फ्लो को हमने अगेंस्ट जाकर हमने यहाँ पर डीएफडीएल इनपुट मैसेज पार्सिंग में डीएफडीएल सेलेक्ट किया और उसके अगेंस्ट जो हमने मैसेज जो है ये जो हमने क्रिएट इसको जो हमने पॉइंट कर दिया एचडीएन डिटेल्स एचडीएन डिटेल्स इसको पूरा को हमने इसके अगेंस्ट जो है मैसेज को पॉइंट कर दिया ओके नाउ हमारा जो है सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है हमने एक्सेप्शन हैंडल लगाए हैं तो लेट मी डू द मैसेज में कंप्लीट ऑन डिवाइड लीव इट और नॉट डोंट ओके नाउ एवरीथिंग हैज कंप्लीटेड लेट मी create a bar file DFDL model leave it okay that's okay now it's created now DFDL model is yes and also build the bar file has been built successfully okay now let me deploy the bar file now my bar file has been will take some time but it is getting deployed first time now it has been deployed okay now you can see let me now it's time to test the let me select the message from the queue what is the queue name csv.in okay let me browse the queue csv.in just first select the queue csv.in let me browse the message that is the this is the message basically I have selected see the message name class roll number and that value these are the I mean the csv format I have selected okay let me write the message I have written the message my detail name okay before that I want to see something show something to show you once you are doing the DFDL testing to show you there is also option of pay and translate you can see the same value in the test case right but here there is also trace you can see the
what is going inside the DFDL, everything you will get in the trace. So you can see also what is going, what wrong is going. You can see from the trace also. Because seeing trace is a very good practice. So trace from here you can see what wrong is going. If anything wrong going, if it's going in the trace, it is not going. Let me let me show you one message that is not good. Let me test it. Let me do some modification here. But I just missed the Rahul comma in between Rahul, right? So let me again. I have selected the same message from here. Okay, click OK. DFDL path processing error occurred. बिना प्रोसेसिंग एरर occurred हुआ और एरर कहाँ जा रहा है? इधर आप देख सकते हैं. It will show you in the parsing no not for offset sequence this in फर्स्ट स्टूडेंट अंडर ब्रैकेट में वन दे रहा है, मतलब फर्स्ट स्टूडेंट में कहीं लोचा है. देख सकते हैं फर्स्ट फर्स्ट में ही लोचा है. यहाँ पर कॉमा छूट चुका है. यहाँ पर सेम चीज यहाँ पे दिखाई सकता है, एरर दिखाई दे रहा है. आप सेम चीज यहाँ पे देख सकते हैं. राहुल में फर्स्ट में यहाँ पर एरर दे रहा है. सेम चीज आप चाहे तो ट्रेस में देख सकते हैं. ट्रेस में रेट under student detail, under student it one it is giving some error. That's the importance of. Let me correct the message. Now come back to the original topic where we were going to debug. Now my message has been came to the input node. Okay. If you see the message format, see the under message it is DFDL, but the message format is same in the form of text. So here we are sending in the form of CSV, but the tree is creating in form of XML. Under DFDL basically it is creating the student detail. Under student detail it is there is a header segment where the header value is getting stored, and under the student there is the under the each tag their value of the student. It is for the different there is 4 student. You can see 1 2 3 4 4 student, and there is a header segment. Okay. So you can see we are sending message in the form of the input, but we are getting tree in form of XML. That's the characteristic of tree. We are basically we want output in form of the in form of XML. That's I have written in the code the set output with dot XML and SC, and we are fetching details from the DFDL. Okay, that's the reason I just written the input dot DFDL input to fetch details from the message, and dot DFDL because we are fetching details from inside the DFDL. We are fetching details, these details. Okay, that's the reason I written the input to dot DFDL. Okay, let me go forward. We go inside the code. See, same thing you will get in the output. Under output, under data XML, you will see the same student details header. Same thing, student details. What I have done, I have just copied under whatever the value inside the DFDL. I have just copied to the under XML. Okay, same thing. Now move forward. I just go outside and I have written to the output queue. What is my output queue? My output queue is XML dot out. You can see same message here, the output. Okay, now let me test another message with different value. Let me change last two as a as Raju. Class is 12 and roll number is D1. Country is Canada. Now order is roll number is class is
10th, and roll number is 25, and class each, and country is India. Now this is the message basically we are sending in, going to send in the input node. Okay, let me browse that message, same message. I just browse the message, you can see same Canada Sora, we are sending the CSV. Okay, now let me write the message. I have written the message, come to the computer. Now same message written, you can see same coming to the output. Now let me go to the compute node and add the key to the output queue. Now message written to output queue, you can see under the student details, it is coming a student header. Under that, the header value is the name under name, and it is name under the class, it class all and rows and location. Now header segment is indented. Now under the student, first student value detail, second student value detail, and the third value detail Raju roll number 21, and the country location is Canada. Okay, and under last it is Saurabh and class 10th, and the country location is India. This is all we are getting in the XML format. That's the importance of DFDL modeling. So this is all about the DFDL modeling we have learned. This is basically DFDL basically help us transform any message of different format, the XML or whatever the message we are expecting format. Okay. Then I think DFDL most of the part I will cover. If you have any doubt, you can comment me. डीएफडीएल में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, डीएफडीएल में बेसिकली अगर कोई भी हमने देखा इस सीरीज में कि डीएफडीएल को हम बेसिकली सीएसवी मैसेज को एक्सएमएल में कैसे कन्वर्ट करें। ओके, उसके अलावा जो हमने क्या किया कि जो कोई भी वैल्यू है उसको जो है इनपुट में सीएसवी मैसेज में डाला और उसको हम देखिए आउटपुट में एक्सएमएल में आया। उसके लिए हमने तीन चीज किया, एक डीएफडीएल मॉडल क्रिएट किया, उसको अगर लाइब्रेरी कैसे क्रिएट कर सकते हो या तो डायरेक्ट एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। अगर आप लाइब्रेरी क्रिएट कर रहे हैं तो लाइब्रेरी को फर्दर एप्लीकेशन से पॉइंट करना होगा। अगर आप एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं तो डायरेक्टली एप्लीकेशन के अंदर में आपको मैसेज फ्लो क्रिएट करना होगा, फिर मैसेज फ्लो के अंदर में जो भी डिजाइन होगा डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, और फर्दर जो है उसको जो है यहाँ पर इनपुट नोड में जाकर आपको डीएफडीएल पॉइंट करना होगा, और उसका आपको जो है स्टूडेंट मैसेज में डिटेल्स जो है उसको देना होगा ना, इट विल वर्क फाइन। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे मैसेज फॉर्मेट को, अब रिक्योरिटी ओरिएंटेड मैसेज फॉर्मेट को या उसके अलावा कोई अदर डिफरेंट मैसेज फॉर्मेट है, उस मैसेज फॉर्मेट को आप चाहे तो आउटपुट में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में भेज सकते हैं यूजिंग डीएफडीएल मॉडलिंग। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ डीएफडीएल मॉडलिंग। तो आपको वीडियो में कोई भी डाउट ना हो, अगर डाउट हो देन यू कैन कमेंट मी। अगर उसके अलावा भी कोई भी अगर यू कैन रीच आउट टू मी डायरेक्टली यूजिंग द माय मेल दैट इज dhanandpassofficial@gmail.com। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो से। चैनल मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और we will meet you again with a new lecture with the interesting topic. Thank you so much. We'll see you again. Bye bye.